हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग नोट्स चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत करता हूँ मेरा चैनल सिविल इंजीनियरिंग नोट्स से। अभी हम डिस्कस करने जा रहे एसएससी जेई 2011 साल का मॉर्निंग शिफ्ट का पार्ट 6 लेके। यहाँ पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करूँगा जो आपका एसएससी जेई गेट ईएसी कोई भी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। 71 नंबर क्वेश्चन, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ फ्रेश कंक्रीट शुड बी ग्रेटर देन 30 मिनट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72, फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट इन लीच एटरियर्स apparatus we adapt 0.78 times the standard consistency of water. This statement is wrong. Question number 73, find the odd entry among silica, lime, rice husks, metacholine and ground granulated blast furnace slag with respect to cement production। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। 74 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ स्टील इज। यहाँ पे करेक्ट आंसर 12 इंटू 10 टू द पावर -6 अपन डिग्री सेल्सियस एंड क्लोज टू अल्फा ऑफ कंक्रीट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अल्फा, the maximum spacing of longitudinal bars measured along the periphery of the RCC column shall not exceed 300 mm. Question number 76, the tensile strength of concrete is in flexure as per IS 456 is 0.7. Question number 77, low workability of concrete conforms to a slump of 25 to 75 mm. Question number 78, for mild and moderate exposures, if 20 mm down course aggregate are used, minimum cement content per cubic meter of concrete must not be less than 320 kg. Question number 79, the bond strength of concrete increases with the quality of steel. Very important question. Question number 80, the increased rate of strength gain of rapid hardening cement is achieved by higher content of C3S, tricalcium sulfate. Very important question. Higher content of tricalcium sulfate. Question number 81, bucking of sand is maximum if the percentage of moisture content is of the order of 5. Question number 82. The study of following statements
यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फॉर कॉन्स्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो एंड क्रीप द डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट अंडर सस्टेनेबल लोडिंग। वाटर सीमेंट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 83, very important question. All RC columns must be designed for a minimum eccentricity of L upon 500 plus D upon 30. L upon 500 plus D upon 30. Question number 84. The minimum cover in a slab should neither be less than the diameter of bar nor less than 20 mm. Question number 85. Question number 85. Total pressure on the vertical face of a retaining wall of height h per unit run exerted by the retained earth weighting W per unit volume. The angle of repose phi is given by WH square 1 minus sin F upon यहाँ पे करेक्ट आंसर ऐसा होगा WH स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 माइनस साइन F 1 माइनस साइन F अपन 1 प्लस साइन F 1 प्लस साइन F। Question number 86. Maximum spacing of side face reinforcement of beams A and B having depth of wave more than 750 mm is smaller of A and B। मतलब 300 mm and width of the wave of the beam mm and width of the wave of the beam से कम होगा। क्वेश्चन नंबर 87. The modulus of rupture of concrete gives the direct tensile strength of the concrete। क्वेश्चन नंबर 88 आज का लास्ट क्वेश्चन। A flat slab is supported on columns। So guys, this is much for today। अगर आप हमारा चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।